वेलकम टू बिटू नेट कोड चैनल। सो गाइज, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीलैन एंड ट्रंकिंग। तो guys, routers break broadcast domain by default. We know that, right? Any broadcast message sent in a network cannot grow across the router. So what happens uh, in a LAN also? Broadcast creates a lot of problem because by default layer 2 switches do not stop a broadcast, right? So if we have a large number of users in a LAN, we can configure the switches to stop some kind of broadcast that can result in a broadcast storm or any other kind of attempt to access the network that user should not be able to, right? For example, we have a network in HR department. We want that that HR employee should be able to access the traffic of HR department only, not the traffic of finance department or sales department or marketing department. So this way we can use the VLAN at layer 2 switches, and we can reduce the boundary of broadcast. So in layer 2 environment, to break the broadcast domain, we can do segmentation with the help of VLAN, right? So within VLAN, users can communicate with the members of same VLAN, but not with the members of different VLAN. So it reduces area of broadcast and traffic congestion between VLAN users. If we want to enable routing, we have to configure inter VLAN routing. Okay, and VLAN's range is from standard VLAN range is from 0 to 14095. 0 is reserved, so we don't use it, and 1 is default. All users are member of VLAN 1, right? And the range of normal VLAN is 1 to 1001. 1002 to 1005 is used for, we don't use it, it's already reserved for FDDI, token ring, and TRNet. So after that we have VLANs 1006 to 4094, that is the extended range, and 4095 is again reserved. Now we give VLAN membership to each switch port, right? To each port on the switch. हम उसे VLAN membership दो तरीके से दे सकते हैं, static and dynamically. Static is given by network admin, and dynamic VLAN membership is handled by VMPA server. We can create a VLAN membership policy server in our environment that will handle the VLANs creation, modification, and deletion of VLANs in our network, right? So in Cisco model, layer 2 switch ports have four modes, right? One is called access mode and other is called trunk mode. So by default, every port on switch is a access port. We will see that shortly in demo. तो Cisco single port जो होता है, that is in access mode, that participate in the data and voice traffic. For example, if PC is connected, right, and that is given access as a access port, right, then we can transfer data as well as voice from that access port through the switch. So second type of mode that we can configure on switch is trunk port. Trunk port is used to carry traffic for different VLANs between the switches, right? So after that, what is trunking? Let's have a look at that also. Uh, Trunking is, as we know, is used to transfer the traffic of VLANs between two switches. तो दो तरह के trunk होते हैं. One is called static trunk and other is dynamic trunk. Static trunk is configured by admin, right? If trunking is required between routers, then that is also done statically by admin. And dynamic trunking,
that can be managed with the help of protocol called DTP, Dynamic Trunking Protocol. And guys, DTP is Cisco proprietary, which is enabled by default on all Cisco routers. Again, if we go in details of DTP, DTP is also of two kinds. One is dynamic desirable, and other is dynamic auto. What happens अगर हम डायनेमिक डिजायरेबल सिलेक्ट कर देते हैं ट्रंक मोड को, राइट? डायनेमिक डिजायरेबल मींस इट विल एक्टिवली नेगोशिएट फॉर द ट्रांसफर ऑफ डीटीपी पैकेट्स, right? Whereas dynamic auto will never assure as negotiate for trunking. It will always wait for DTP packets. So we have three conditions that can be possible uh, in trunking. If one port is in dynamic desirable mode and other switch port is also in dynamic desirable mode, तो उनमें trunking हो जाएगी, राइट? बाय डिफॉल्ट हर एक पोर्ट एक्सेस डायनेमिक ऑटो में ही होता है, राइट? एक्सेस मोड में होता है, बट डायनेमिक ऑटो में भी हम कर सकते हैं। अगर डायनेमिक ऑटो कर देते हैं, वो साइड डायनेमिक ऑटो है तो ट्रंकिंग नहीं होगी, और एक साइड अगर डायनेमिक डिजायरेबल है एंड अदर साइड डायनेमिक ऑटो है, राइट? तो ट्रंकिंग हो जाए, बिकॉज वन विल नेगोशिएट फॉर DTP packets, one will start sending packet for trunking, and other side D dynamic auto, because it passively waits, ये wait करता है DTP packets, तो ये accept कर लेगा। तो दोनों साइड DD है तो ट्रंकिंग हो जाएगी, एक साइड DD है एक साइड DE है, ट्रंकिंग हो जाएगी। अगर दोनों साइड DDA है, राइट, देन देयर इज नोबडी टू स्टार्ट द नेगोशिएशन फॉर DTP पैकेज, तो उस केस में ट्रंकिंग नहीं हो जाएगी। अब इसका हम प्रैक्टिकल देख करके देख लेते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो गाइज ये मैंने दो पीसीज लिए हैं, चार पीसीज और दो स्विचेस, टू पीसीज ऑन ईच स्विच। तो हम एक ही नेटवर्क ले लेते हैं, जो उसमें हम सपोज हमारा एक लैन है, उसमें हम दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। वी वांट के एचआर का यूज़र एचआर के यूज़र से ही कम्युनिकेट कर पाए, सेल्स के यूज़र को ट्रैफिक ना भेज पाए, राइट? सिमिलरली सेल्स यूज़र शुड बी एबल टू send traffic to sales user only, not to HR user। तो ये हम करके देख लेते हैं। मैंने आईपी एड्रेस दिए हैं आपको, मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये फास्ट इथरनेट 0 ऑन PC1 इज 10.0.0.1 आईपी एड्रेस, पीसी पे है, PC2 पे है 10.0.0.2, PC3 पे है 10.0.0.3 और 4 पे है 10.0.0.4। and PC1 is part of HR VLAN, as VLAN 10 HR named. PC2 is part of VLAN 20 named sales, and PC3 is part of VLAN 10 named HR, and again for PC4 is part of VLAN 20 named sales। तो अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं सबसे स्विचेस पे। गाइज वीलैन की इंफॉर्मेशन फ्लैश में स्टोर होती है, सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे फ्लैश में अभी कोई वीलैन नहीं है, और वीलैन भी देख लेते हैं। हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो वीलैन 1 होता है, राइट? तो ये वीलैन 1, ऑल द पोर्ट्स आर मेंबर ऑफ वीलैन 1, और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने डिस्कस किया 102.345, ये रिजर्व्ड हैं, वी कैन नॉट यूज़ देम। तो हम शो इंटरफेस स्विच पोर्ट देख लेते हैं। तो ये हम देख लेते हैं, ये हमारा ऑपरेशनल मोड डायनेमिक ऑटो होता है सभी स्विचेस का, राइट? एंड ऑल पोर्ट्स आर मेंबर ऑफ VLAN 1। तो सबसे पहले व्हाट विल डू, विल क्रिएट VLANs ऑन स्विचेस। Currently there is no VLAN, so let's create VLAN 10
name HR. Let's create VLAN 20, name sales. तो ये हमारे दो VLANs बन गए हैं, HR20 और HR एंड सेल्स, राइट। तो लेट्स गो टू फ्लैश, और फ्लैश पे हम देखते हैं कोई फाइल बनी है। ये हमारी VLAN डॉट डेट फाइल बन गई फाइल फ्लैश में, दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट VLANs। जैसे ही हम VLANs क्रिएट करते हैं तो ये फाइल बन जाती है गाइस। नाउ लेट्स गो टू स्विच टू, लेट मी नेम इट switch 1. Let's go to switch 2. Let's name it switch 2 from here quickly. अभी फ्लैश में कोई VLAN information नहीं है, VLAN.dat file is not there. Show VLAN brief. These are the default VLANs. तो इसमें भी VLANs हम क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा गाइज, उससे पहले हम देख लेते हैं सभी मशीन्स को पिंग करके देख लेते। PC1 पे हैं हम। IP config its address is 10.0.0.1। मैं आपको पिंग करके दिखा देता हूँ 10.0.0.2। राइट, अभी कम्युनिकेशन हो रहा है सभी मशीन्स के साथ। 10.0.0.3, 10.0.0.4, right? So we don't want that this kind of permission should be there to all the users. तो हम इसके लिए हम VLANs में डिवाइड करेंगे नेटवर्क को। तो स्विच 2 पे भी हम VLANs बना लेते हैं। VLAN 10 HR, VLAN 20, ये हमारी फ्लैश में VLAN.dat फाइल बन गई। ये देख लेते हैं VLAN HR और सेल्स बन ली। अब हम इस VLAN को मेंबरशिप दे देंगे, राइट। कौन सा पोर्ट, स्विच का कौन सा पोर्ट किस VLAN का मेंबर होना चाहिए, तो वो हम अभी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्विच 1 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 0/1 switch port mode, right, because we have n device connect to switch port 0/1, तो हमें इसको दे देंगे switch port mode access 0/2 switch port mode access। गाइस, अभी हम इंटरफेसेस को ये इसकी VLAN की मेंबरशिप दे देंगे। लेट्स गो टू इंटरफेस फॉर 0/1, इसको हम बोल देंगे यू हैव टू बी पार्ट ऑफ स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। हाउ many VLAN? We are giving it membership of VLAN 10। स्विच पोर्ट 0/2 को हम बोल देंगे यू आर मेंबर ऑफ स्विच पोर्ट
स्विच पोर्ट 20। तो यही काम हम स्विच 2 पे भी कर लेते हैं। (0/1) switch port access VLAN 10 (0/2) switch port access VLAN 20. Show VLAN brief. हम देख सकते हैं F01 is part of VLAN 10 and F02 is part of VLAN 20. Let's check same thing on show VLAN brief. So here also we have given uh, uh, F02 as member of 20 and 1 as member of 10. गाइस नाउ हमने अभी ट्रंकिंग नहीं करी है, तो अगर हम देखेंगे वी विल ट्राई टू पिंग these pieces to one another, right? We should not be able to ping, so let's try to ping from pc1 10.0002. This is different VLAN, right? And we are not able to ping since we have not configured trunking. तो चलो 10.0.0.2 के बाद 10.0.0.3 देखते हैं। This is the member of same switch but a different VLAN and network is also same, subnet is also same. तो 3 को देखते हैं करके। तो गाइस जब तक हम ट्रंकिंग इनेबल नहीं करेंगे तो ये ट्रैफिक नहीं जाएगा, राइट? और हम इस साइड के पीसीज को भी चेक कर लेते हैं। IP address is always given. Let's try to ping the local PC first of all. The communication is not happening because both these PCs are in different LAN. And let's try to ping PC in different switch, and this is not happening, right? So now let's see how to do we configure trunking on switches. Let's go to configure terminal, and the ports that are connecting to other switch, they are FA03. So we will go to FA00/3. We will configure trunking here. We will inform FA03 that you should have to work like a trunk port, switch port mode trunk, right? We can see that we got the message. Switch port मोड देख लेते हैं, हमें यहाँ पे है ऑप्शंस एक्सेस डायनेमिक ट्रंक, राइट? तो उससे पहले हम देख लेते हैं। Here it is saying that uh, right now the status of 03 port is trunking, right? And but it is allowing only native VLANs. And let's do the same thing on uh, so सो गाइस अगर हम देखेंगे तो ये इंटरफेस ट्रंक कमांड में बाय डिफॉल्ट VLANs allowed on trunk are 1 to 1005, but right now the VLANs that are allowed and active on FA03 port are VLAN 1 that is default and VLAN 10 and 20.
So on other switch also we see that VLANs active on FA03 port, right? Switch 2 पे भी हमारा FA03 पोर्ट है और स्विच 1 पे भी। तो दोनों में VLAN 1 बाय डिफ़ॉल्ट अलाउड होता है और 10 और 20 पोर्ट्स ही अलाउड है, राइट? तो अभी हम पिंग करके देख लेते हैं। अर्लियर वी वर नॉट एबल टू पिंग, now let's see, let's try to ping 10.0.2, right? We cannot ping 10.0.02 is member of different VLAN. So HR user cannot ping VLAN 10 user, HR user cannot ping member of sales user, that is VLAN 20, because he is in different VLAN. तो अभी हम दूसरे HR यूज़र को पिंग करके देखते हैं। its IP address is 3 and reply is coming, so that means members of same VLAN can ping, because we have now enabled trunking on both the switches, and end user devices are member of access ports. तो सेम चीज़ हम PC2 पे भी देख लेते हैं। पिंग PC2 का आईपी मैं आपको दिखाता, 10.0.0.2 है, पिंग 10.0.0.1, राइट? एंड देयर इज नो कम्युनिकेशन पॉसिबल, सो लेट्स ट्राई टू पिंग 10.0.0.3, no communication possible, right? Let's try to ping 10.0.4, PC2 is member of sales and reply is coming, so that means our trunking is working, right? So guys, this was the video about how to create VLANs and create trunking and give membership of access ports to trunking and enable VLAN routing on the across the switches. Guys, आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं आप किस तरह के टॉपिक्स पे और वीडियोस देखना चाहेंगे। I will definitely make videos on those topics. Thank you. Have a great day ahead. Bye bye.